Hello everyone, welcome to OASHUB Daily Current Affair Discussion. My name is Sipsankar Hazra with you Daily Current Affair Discussion. आज में first article Indian Express रो देखिबा. The women should have their right to choose the what they wear. That means first article रे कहछि the women should have their right. तो सेमान को निजर चॉइस रहबा दरकार सेमाने कोन पिंधिबे. तो ये इशू कोठी ये इशू आसीछि हमें देखबा. साधारणतः समस्त जानछे तमे हिजाब कोन. तो हिजाब जहाँ को हमें हेड स्क्राफ बोली कहचे जहाँ को हमें कहचे स्क्राफ ना स्क्राफ्स जदि हमें कहबा जहाँ को हमें स्कार्फ बोली कहचे बुझबर्तनी जो मुंडरे बांधती माने जो कला कपड़ाटा हमर कहती साधारणतः जहाँ को हमें हिंदू रे भेल बोली कहा जाए बा ओढ़ोना बोली कहा जाए सेमती से माने स्कार्फ बांधती जहाँ को हमें हिजाब बोली कहा जाए. दैट मीन्स रिसेंटली गोटे आसीथिला टॉपिक कोन आसीची दैट इज वीपी दैट इज व्हाट सुसरा. That means who always have been a forefront fighter for the Muslims right by ये that means the what that is the surah जाको तमे कहि परिबो. This person has recently removed her head scarf. ये तार head scarf को public रे हटि देथिले. से जेहेतु जने मुस्लिम वुमन आउ निजर जो स्कार्फ को जदि पब्लिकली तमे ए करिबो that means that is against the what Muslim laws. जहाँ को कंडेम किए कले दैट इज द उमार फाइजी मुकाम. ये चाकू कहले द लीडर ऑफ द केरला दैट मीन्स हमें कहला केरला जाम दैट इज इजाथुल उलाम ग्रुप रो जो सुन्नी स्कॉलर अछंती से कहले ए भलिया एक्ट बा में पब्लिक रे जो मुस्लिम महिला जनक स्कार्फ को हटी देले दैट इज डिसग्रेसफुल फॉर द सोसाइटी एंड दैट इज नॉट द वे समबडी मतलब had to do. से भी एमती करियर न थिला. she could have refrained herself एमती करियर न थिला because हमर एटा रिलीजन रो जो इंटीग्रिटी थाए ना तो ये खत्म हो जबो. तनु से कहया कथा पब्लिकली जेतलो हमें सेटा को रिमूव करছে दैट मींस हर इंटीग्रिटी दैट मींस सेटा को क्वेश्चन आसी गला. तो ये कहया कथा ये जो पब्लिकली जो निज हिजाब को से रिमूव करे तार इंटीग्रिटी को हार्म कला से निजे. किंतु महिला जन को कहबा कथा दैट इज व्हाट Surah. Actually it R ta silent hai. So that is why I am pronouncing like SUHRA that Surah. That person said से कहले कि जदि मु पब्लिकली ए भलिया कली सेटा मोर किछि इंटीग्रिटी खत्म हेलानी. माय इंटीग्रिटी रिमेन्ड हाई. सेटा हाई रहला कि मो इंटीग्रिटी विथ स्कार्फ विदाउट स्कार्फ सबले हाई रहिबो. एमती नाही कि सेटा लोकन को सामने रे मु स्कार्फ को हटै देली मोर इंटीग्रिटी हटि गला. तो मुस्लिम दैट मीन्स हमें कहबा जो हेड स्कार्फ हमको यूज करा जो छी ये आजकल बहुत नाउ आसीगला. तो आकू नहीं कि पॉलिटिकल लीडर एपी अनिल कुमार दैट मीन्स हमें कहबा जो सीपीएम लीडर आकू नहीं कि कोन करचंती इंटरवेन निजो को करिचंती. ओके तो दैट मीन्स ये कहबा कथा कि जदि हमें मुस्लिम यूनियन लीग कथा तमे नै जो सार्पला को मध्य कंडेम कले. अच्छा मो कहया कथा कि जदि हमें ऑथर कहबा कथा देखबा जो आर्टिकल्स रे कहबा कथा कि जो दैट मीन्स हमें कहबा पॉलिटिकल सर्कल्स रे डिबेट चलीला ए दैट मीन्स अनिल कुमार that his interventions has embodied the Muslim women in that is but Malappuram to say what no to those what I'm trying to impose the headscribes. तो ये कहबा कथा मालापुरम रे टू से नो टू दोज ट्राइंग टू इम्पोज द हेडस्क्राफ्ट्स. ओके किंतु कथा होची जो माने आज कहउछंती ए जो अनिल कुमार कथा नै जो सीपीएम लीडर कथा नै जो. ओके ये माने जो माने आज कहउछंती के ना से माने स्कार्फ पिंधिया कथा. किंतु जति हमें देखिबा कर्नाटक गवर्नमेंट जेतेबेले किछि दिन तळे जेतेबेले आमे जानिबा जेतेबेले बीजेपी सरकार थिला कर्नाटक गवर्नमेंट जेतेबेले कहले कि हिजाब पिंधिबा मना स्कूल रे. ओके बा स्कार्फ जोटा पिंधिबाटा मना ब्लैक रो. तो सेतेबेले बहुत सारा अपोजिशन पार्टी माने लागि पड़ले कहले ना एमती हबनी सुप्रीम कोर्ट को केस गला कि सेटा तांकर मतलब आमे केबा सेटा तांकर निजर चॉइस अछि से पिंधि परिबो न पिंधि परिबो. तो एमिते बहुत पॉलिटिकल वे एंड क्राई देखिया को मिलिथिला. ताले जदि हमें कहबा सेटा ही पड़ला ताले एबे काहे कि एटा जदि सेटा जदि सेते बेले हमें कहले से माने पिंधंतु अरे जदि तांको तमे कहउछ एबे जणे कहउछ पिंधिबनी त हम केमते तांको मना करिबा. तनु करके इट वुड बी बेटर जदि हमें देखबा कर्नाटक केस को जदि हमें नहीं जिबा did not allow the hijab that means हमें clad girls in the classroom जाको डिनाय करथले जाको सेम टाइम रे बहुत सारा प्रोटेस्ट हैला. अच्छा एबे जदि सेम मुस्लिम रो गोटे झियोटा कहउछ से पिंधिबनी तो एथिरे जबरदस्ती काहे करिबा. दैट मीन्स
हंड्रेड्स ऑफ वुमेन सेमती गोटे आउ गोटे केस देछि कि एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हितला ईरान रे तो ईरान रे कोन हला गोटे हिजाब गोटे जियोटा पिंधिकी जाई नथला बोली तार ताकू कोन कले टर्चर कले कस्टडी रे पुलिस नेले आ से मरी गले मध्य ताकू नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ लोक माने एंटी हिजाब प्रोटेस्ट कले ईरान रे से माने आसिले सालून गले निजर चुटी काटिले से माने हिजाब को खत्म कर देले पब्लिकली कले रिमूव कले हेयर कट कले कटिंग द हेयर कले तो एमिति ईरान रे मध्ये देखा अछि तो दैट मीन्स आम कह वुमेन्स मान को आम फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ देयर बॉडी फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ देयर माइंड फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ देयर ड्रेस ये सब दबा कथा दैट मीन्स ये इंस्टांस हमको ईरान रु मध्ये आसीची ये इंस्टांस मध्ये इंडिया रु आसीची तेणु करके व्हाट द वुमेन्स ऑफ द मुस्लिम दे विल वेयर लेट देम टू डिसाइड एटा तांको डिसाइड करिया पे दबा ओके बट से तार इंडिविजुअल राइट अच्छी फंडामेंटल राइट से तार इंडिविजुअली जहा करि परिबे तो दैट इज व्हाई जदि हमें कर्नाटक गवर्नमेंट टाइम रे देखिबा सेतबेले हितला तले एबे काई हम तांको फ्रीडम दवानी ये होची समरी तो समिति जेतरो हमें देखिबा कि इंडिया ड्रॉज यूएस क्लोजर डिस्पाइट द हम कह डिस्ट्रैक्शन तो ये किए लिखिसंती दैट इज द केपी नायर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस्ट से कहिसंती कि जो कनाडा दैट मीन्स आर मु समरी कहूची जो कनाडा जेतरो इशू आसिला जो जो जिगार केस हम देखिबा जो कनाडा दैट मीन्स द जो खालिस्तान जो लीडर थिले प्रो खालिस्तान लीडर जहा को इंडियन गवर्नमेंट टेररिस्ट बोली बा वांटेड बोली डिक्लेयर करथिला तांकर डेथ फॉरे कनाडा दैट मीन्स हमें देखिबा कनाडा यूएसए रिलेशन कनाडा इंडिया जो रिलेशन टा कोठी ना कोठी खराब हो जाइछि आउ ताकू कहा जाय कि आगुरु बहुत सारा आर्टिकल्स रे हमें डिस्कस करिचे कि कनाडा को सपोर्ट किए करूछि यूएसए सपोर्ट करूछि यूएसए रो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे आर सपोर्टिंग द कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड एक्जेक्टली यूएसए हैज ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन दैट वाज द इंडियन एजेंट हु किल्ड दैट सिक पर्सन इन कनाडा तो ए भलिया हे कि कोन हैला ना जो रिलेशन हमरो खराब हो जाइछि बोली कि दैट माइट बी कनाडा माइट स्पॉइल द रिलेशन और दैट माइट स्पॉइल द रिलेशन बिटवीन इंडियाज एंड यूएस रिलेशन तेमती बहुत सारा चलला दैट मीन्स हमें कहबा तो सेथरे कोआगला के सम हाउ कनाडा यूएस भीतर इंडिया भीतर हमें कहबा रिलेशन खराब होची तो जेहेतु यूएसए बॉर्डर शेयर करूची कनाडा से तो माइट बी हमर रिलेशन खराब हबो किंतु ये सब कल्पना जल्पना हमें कहबा है ना that means in the that puts to an end the recent visit of our foreign minister that means amikeba Jaishankar सेथरे प्रूफ हो जाइछि that the US Congress personnel the list ये गोटे लिस्ट दियाइछि so many of the US Congress personnel जेमति तमर रिचर्ड वर्मा कथा नै छ डायरेक्टर ऑफ द अमेरिकन नेशनल साइंस फाउंडेशन US सर्जन जनरल विवेक मूर्ति व्हाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ द ड्रग्स कंट्रोल पुलिस राहुल गुप्ता the president Joe Biden's domestic policy advisor that is what Meera Tamte Nisha Bishwal deputy chief executive of the Americans here so these are the long list diya jaichi these are the peoples who met whom Jaishankar recent visit right ethru jana poduchi the thousands hundreds of congressmen they were supporting they were having cordial talks with the foreign minister Jaishankar and that shows the maturity of the relation between India and USA. So American Development Finance Corporation ko tha nahi jo that means the color of friendship हमको एठू जाना पड़ुचे so Canada which was trying to mess our relation or who was exactly trying to like spoil the relation between India and USA might be से सेते सक्सेसफुल हेई परि ना हेई परिबो नाही तो जदि सेति पई ये टॉपिक बहुत बढ़िया लिखिसंती ताको कहया कथा कि यूजुअली जो कनाडा रो जो गोटे अटेम्प्ट थिला ना कि टू मेक यूएस एंड इंडिया हैव टू द डिस्टेंस सेटा हेई परिबो नहीं प्लस तमे जेतरो इंडिया कथा देखिबो जे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जेतरो मेडिसिन स्क्वायर को जाइथिले जेतरो हमें कहबा फर्स्ट विजिट रे मेडिसिन स्क्वायर कथा नहीं जाओ देन बाराक ओबामा जेतरो थिला ता परे जदि हमें देखिबा आंको टाइम रे कारो बाइडेन टाइम रे देखो ता पूर्वरु जदि हमें देखिबा दैट इज व्हाट इट वाज द टाइम ऑफ हमें कहबा डोनाल्ड ट्रम्प कथा नहीं जाओ तो सबु बेले यूएस कोट न कोटी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमें कहबा नरेंद्र मोदी जाइचंती आउ जो हमर जो डोमेस्टिक हमें कहबा दैट इज द सपोर्ट बा हमें जाको कोचे इंडियन हमें कोचे डायस्पोरा
जो हमर डायस्पोरा रो सपोर्ट मागी छंती मोदी जी सबले डायस्पोरा रो सपोर्ट डायस्पोरा पॉलिटिक्स खेली छंती से सबले ए न्यू पॉलिटिक्स गेम इज बीइंग प्लेड बाय ऑथर कहिबा कथा कि मोदी जी आसला परे तांकर गोटे नुआ फैशन हिची कोन ना जो डोमेस्टिक इंडियन कम्युनिटी को एंगेज करैबा सो दैट कोन होची ना गोटे प्रेशर क्रिएट करूची तेनु करी कि ता द्वारा जदी हम देखबा आंकर जो न्यू वे ऑफ टू अलाइन द इंटरनेशनल रिलेशन बाय यूजिंग द डायस्पोरा दैट इज हम कहबा ऑसम तेणु ये बहुत भल कर मोदी जी है ना बहुत थोड़ा रिलेशन खराब है अप एंड डाउन आसी किंतु फिर भी जदि आमे देखिबा रिलेशन सबले स्ट्रांग है कि एबे भी रिलेशन आमे देखिबा स्ट्रांग है कि अछि है ना एबे भी आमे देखिबा रिलेशन कोन स्ट्रांग है कि अछि डन तेणु करी आमे देखिबा तो जयशंकर जो रिसेंट विजिट करथिले सेथरे आमे देखिबा 2+2 डायलॉग्स मध्ये सेथरे कंडक्ट कराइथिला तो दैट मीन्स हमें कहबा इवन इंडिया रो हमें जो इंडिया इज बट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए होची हमरो लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर मध्ये कथा नै जो दैट इज बट इंडॉक्स एक्स कथा नै जो डिफेंस एक्सरसाइज कथा नै जो इकोसिस्टम कथा नै जो 2+2 डायलॉग कथा नै जो तो ये सबु दर्शाउची एंड दिस ऑल दैट सेज दैट वी आर हैविंग ए गुड रिलेशन कोठी बी देयर इज नो सॉर्ट ऑफ strain in our relationships between the India and USA. So that is why the attempt which was made by the Western country and that would be supported those who were also supporting the Canada, that would not work in case of this strong foreign policy of India. The propaganda of the Canada would not work here and India will withstand all those allegations made by the Canada, and India has frequently time and again said that whatever the allegation made by the Canada, that does not have any evidence to back that one. Okay, तेबे हमें देखिबा the next articles हमें देखिबा दिवाली आसुची समस्ते जानिछ दुर्गा पूजा दिवाली फेस्टिव सीजन गणेश पूजा रो दैट मींस हमें देखिबा the festive season starts in India with the marks of the Ganesh festival the गणपति बापा. Okay, तो आजिकली हमें देखिबा फेयर दैट मींस एबे गोटे न्यूज आसीथला कि तमिलनाडु रो गोटे फैक्ट्री रे कोन हिची 12 वर्कर्स दे डाइड बिकॉज ऑफ द व्हाट ऑब्वियसली हमें देखिबा दैट इज अरियालूर डिस्ट्रिक्ट्स 12 workers were dead because of the firecracker burst. And Tamil Nadu is the largest producer of the firecracker in India. Jemti Sip, that is what Sippur. Jemti ame jancha kichi areas ochi, ana that is like the what ame jemti what Sivakasi Tamil Nadu. Sivakasi Tamil Nadu, that means ame firecracker industry Tamil Nadu बहुत चले. आउ ये भी firecracker production बहुत चली ची. जमती गोटे लिखा ची place that is अति बेले. आउटस्कट ऑफ द दैट इज सॉरी बेंगलोर रे मध्ये बहुत सारा आमे देखबा मतलब एथरे मध्ये हेतला कोन गोटे फायर फ्लेम हे कि मध्ये लोक मरछंती तो कर्नाटक तमिलनाडु बॉर्डर रे आमे देखबा मासी फ्राई काकर मार्केट देखा जाय एथरे बहुत सारा लोक मरि गेलानी तणु आमे देखबा जो डेंजर को आखि आगे रखी कर्नाटक गवर्नमेंट चीफ दैट मीन चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया करे बैन करछंती दैट इज द फायर क्रैकर इन द पब्लिक फंक्शन रे फायर क्रैकर को बंद करा जिवो जदी फायर क्रैकर यूज करबो दैट शुड बी ए ग्रीन क्रैकर सेटा मध्ये कोन हितवा दरकार ग्रीन क्रैकर हितवा व्हिच विल रिड्यूस द पोल्यूशन. सो कर्नाटक गवर्नमेंट कहा कथा कि वी वुड नॉट अलाउ द फायर क्रैकर टू ब्रस्टिंग इन द but during the function public function we will allow only the green cracker को हम यूज करा पिन देवा तो ग्रीन क्रैकर आउ कोटी जेमती तमरे दिल्ली रे जानचो फायर बैन हेची हरियाणा वेस्ट बंगाल ए सब जगह रे हम पंजाब तमिलनाडु मतलब स्पेसिफिक टाइम रे बैन करा जाय ड्यूरिंग द दिवाली कि हां ए टाइम रे तुमे बाण फुटै परिबो नाही तेणु करके ये सब आमर आसी था. तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट मध्य देखो दिल्ली रे जो फायर क्रैकर ब्रस्ट होता है कारण शीत आसले दिल्ली रे बहुत पॉल्यूशन बढ़ी जाए तो फायर क्रैकर ब्रस्टिंग को मध्य लोग रोक लगे तो दैट मीन्स ये हमें देखा ऑल्सो द एक्ट एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एंड 2008 गवर्नमेंट दैट मीन्स हमें कह डिस्प्ले स्टोरेज ऑफ फायर क्रैकर्स को हमें कौन करा जाए दैट वुड भी हमें ताको कंट्रोल करा जाए तेणु करके हमें जो फायर क्रैकर्स आसुची जेतिक भी बनाउची इट शुड बी ग्रीन हवा दरकार एंड शुड बी रेगुलेटेड एंड ऑल्सो जोटी स्टॉक करा जाउची जो गोडाउन्स मानकर स्टॉक करा जाउची it should be control way and it will have all the measures to prevent the firecrackers flames and the fire as well because that is what killing the people. Now the next articles जदि आज रो आगोटे आसीबा दैट मींस हमें समरी कहूची मु तमन को जोटा इजी हबो पढिला बेले नेक्स्ट आर्टिकल्स द ऑथर कहिसंती that is काजल वासु तो ऑथर होचंती काजल वासु द वेटनरी जर्नलिस्ट तो ये कौन कहते देखो द गाजा
that is what Gaff spoke hole on the Israel Iron Dome. ये कहवा कथा कि जो आयरन डोम जे दुनिया सारा ना कमाई कि आयरन डोम is one of the best defense system in the world. Obviously we have also from time and again we have repeatedly went through the GS paper while going through the time about science and technology हमें पढ़ीचे मध्य कि जो आयरन डोम अछि जो आको हमें डिफेंस सिस्टम कहूचे एयर डिफेंस सिस्टम एटा कोन एयर इट्स अ एयर डिफेंस सिस्टम which protects the missiles coming from the enemy पाखर जो मिसाइल्स आसे ताकू से कोन करता है प्रोटेक्ट करी थाए ओके एनिमी पाखर जो मिसाइल्स आसे ताकू से प्रोटेक्ट करी थाए दैट मींस एटा जति हमें देखिबा तो जो हमास माने लॉन्च करछि मोर देन 7,000 मिसाइल्स ठीक अछि ये आयरन डोम जो सिस्टम अछि तो दैट मींस इजराइल पाखरे तीन प्रकार फोर्स अछि गोटे हला ग्राउंड फोर्स गोटे हला अंडरग्राउंड फोर्स गोटे हला एयर फोर्स तो ये जो सब फोर्स दे आर वेल इक्विप्ड अछि इजराइल को कहा वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिफेंस एंड हाई टेक्नोलॉजी कैपेबल कंट्री इन द वर्ल्ड इजराइल रो दैट मींस मोस्ट वॉल्टेड सिक्योरिटी सिस्टम जाको हमें कहा जे दैट इज आयरन डोम जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बोली कहा जे ये भी फेल हेछि कोन पे बिकॉज ऑफ द स्वाम अटैक बिकॉज ऑफ द व्हाट स्वाम अटैक एट ए टाइम जदी हमें थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट को छाड़ू से लॉन्च करछ मिसाइल तो ये जो डिफेंस सिस्टम अछि आयरन डोम सिस्टम ये केतेटा को इंटरसेप्ट करिवो दैट मींस हमें जो इंटरसेप्ट कथा कहूचे how many missile would be intercepted by the iron dome so there would be some loopholes so there would be I will say what loopholes would be there okay so that is why that means here हमको देखा जिवो that would be the loopholes okay that would be the loopholes तो ये loopholes हमको देखा जो most of the intelligence happens हमको देखा जिवो okay तो ये तुमको देखा जो this would be the region okay तो ये हमको देखा जो ये सब रीजन देखा द लॉन्ग रिपोर्ट ऑफ द फेल्युअर दैट मींस हमर फेल्युअर आसीची बुझ परछनी तो फिनलैंड यूएसए ये सब जहां भी हम देखे तो आयरन डोम रो इनएडुकेसी हम कहबा इनएडुकेसी इवन जो तमीर मिसाइल इंटरसेप्टर जाको यूएसए मध्ये परचेज करिछि काठो और यूएसए दैट मींस एंड इजराइल मिसी की बनाउछंती व्हिच इज यूज्ड इन द डिफेंस सिस्टम ये भी काम को आसी नाही तो आयरन डोम इंटरसेप्टर जोटा कि यूएसए मध्य को रिलाय करछुंते आ ऊपर इंडिया रिलाय करे यूएसए करे एता ओके समझते चाहती किंतु जदि हम देखबे यूएसए इजराइल गोटे डील हेछि 1.1 बिलियन डील गोटे हेछि दैट मींस गाजार ई जो हमास माने जो अटैक करले दैट व्हाट होल द आयरन डोम सिस्टम तो आयरन डोम रो जो लूफोल्स को देखै देले कि व्हाट एंड व्हाई नॉन ऑफ द व्हाट आमे कहबे द डिफेंस सिस्टम इज द व्हाट 100% एक्यूरेसी आमे कहा को भी कौन सी डिफेंस सिस्टम को कहि परिबा नाही ओके तेनु करके ये जो सिस्टम को हमें देखिबा तो मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स दैट रेन डाउन द सदर्न एंड द सेंट्रल इजराइल दैट एग्जैक्टली एंड व्हाट अनकंसेसेबल ओके देयर वर इनएक्यूरेसी जो रडार यूज करूची तार इनएक्यूरेसी तो हमास रो जो रॉकेट फायर करची आयरन डोम को दैट मींस हमें कोठना कोठे आयरन डोम जो द तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल अछि कोठना कोठे से काम करिनी फिर भी ताकू भेद करी कि हमें जाकू कहिबा कि द दैट मींस द मिसाइल्स फ्रॉम द हमास दे वर एबल टू दैट मींस व्हाट एंटर इनटू द एयर स्पेस ऑफ द इजराइल एंड कॉज द डैमेज टू द इजराइल्स एज वेल so we can't depend on certain system हम कहबा and nothing could be foolproof तो याकू ऑथर कहया कथा या तनकर जो आयरन डैम रो जो बैटरीज अक्रॉस द इजराइल्स ये कोठन कोठे एबे न्यूज़ को आसी जाई छी ओके तले फंडामेंटल लेसन कोन फंडामेंटल लेसन होउची कि जो आयरन डोम जहा को हमें मध्ये रिलाय करूथले ये सब लूफोल्स थाए कौन पे बिकॉज ऑफ द स्वाम अटैक जेतो एट ए टाइम ठीक अछि तमरो जो इंटरसेप्टर अछि से गोटी 2टा 5टा 10टा 15टा 50टा मिसाइल एट ए टाइम छाडिबो आ जति स्वाम अटैक हो दैट मींस एट ए टाइम थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल जेतो आसीबो एनिमी पाखरु हाउ मेनी इंटरसेप्टर यू आर हैविंग और हाउ मेनी ऑफ देम वुड बी इंटरसेप्टेड पुरानो काल रे मध्ये हम देखबा रामायण कथा नै जाओ महाभारत कथा नै जाओ सेतल जो रॉक सब तीर छाडुथले एट ए टाइम 10टा 15टा 20टा सो दैट गोटी ना गोटी से कोन हबो भेद करिवो तार जो टारगेट को दैट विल अचीव द और हिट द टारगेट तो ये जो स्वाम अटैक ना सेमती ट्रेडिशनल अटैक हमें कहि पर बैटल ऑफ स्वाम तो दैट मींस वी नीड आल्सो स्वाम हमको मध्ये इंटरसेप्टर दरकार जोटा कि बहुत डिफिकल्ट तो न्यू पेंटागल पॉलिसी मध्ये को रिवाइज करिवो देखिबो कि वेदर आयरन डोम पॉलिसी बा मल्टीपल हमको डोमेन ये
करा जाय परिबो तो इंडिया मध्ये हेतु शिखिबा दरकार कि आमको कौन सी ना डिफेंस सिस्टम नन ऑफ द डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड कुड बी 100% रिलाय ना से S-400 ना से आमको आयरन डोम ना से एयर एंड द फोर्थ डिफेंस सिस्टम जेते डिफेंस सिस्टम अछि ओके apart from that आउ किछि हम देखिबा दैट इज द देपसांग दैट इज व्हाट रेजोल्यूशन awaits for the आम कहबा दैट मींस व्हाट कॉफ्स कमांडर टू होल्ड द टॉक ऑब्वियसली हम जानछे दे देपसांग एंड डेनचोक रे सबले मीटिंग हबो है ना तो आईबी सो दैट हम कोन करिवा कमांडर लेवल मीटिंग रहिबो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी तो ऑब्वियसली हम देखबा इंडियन हिस्ट्री दैट मींस हम कहिबा ये गोटे कोन डॉक्यूमेंट करिवो है ना जोटा कि 1500 रु नै कि 1947 जाय गोटे फिल्म एनिमेशन करके बनेइबो सो ओके ये सब छोट छोट एमती न्यूज तमे देखि परिबो Ministry of Information Broadcast has created a two-part animated film series of educating the children about the struggle of independence through the animated videos गोटा कराजिबो ओके तो एमती हम देखिबा दैट मींस जयशंकर मध्ये जाइछन्ती इंडियन ओशन ड्रीम जोटा आमेर कोठी होची जोटा हमर हेल्ड हेची बर्तन श्रीलंका रे सेठी जाइछन्ती इंडियन ओशन ड्रीम अंडर ए सागर इनिशिएटिव जोटा कि सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे पे इंडिया चाहे इंडिया मध्ये तार नेबरहुड फास्ट पॉलिसी रखिची इंडिया चाहे इंडियन ओशन लिटरल कंट्री जेते अछि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टमेंट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है ना डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब अचीव करा जाओ एंड फॉर दैट इंडिया विल हेल्प इट्स कंट्रीज तो इंडिया मध्ये आको कोन करबो हेल्प करबरे हेल्प करबो इंडिया विल हेल्प दो इंडियन ओशन कंट्रीज मानको फॉर द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डिफेंस कथा नै जो साइंस टेक कथा नै जो सब उथरे इंडिया हेल्प करबो बोली इंडिया प्रॉमिस करूची ओके सो दिस मच फॉर द करंट अफेयर डिस्कशन आज पई सो आज पई एथिकी थैंक यू एवरीवन